खबर असम के जिला सोनितपुर से है, जहां आज संपूर्ण देश के कोने कोने में भारत का 76वां गणतंत्र दिवस मनाया जा रहा है। अन्य स्थानों की तरह असम के ढेकियाजुली के शहीद मैदान में आज देश का 76वां गणतंत्र दिवस मनाया गया। उल्लेखनीय है कि सोनितपुर जिला प्रशासन के सहयोग से और ढेकियाजुली उप जिला प्रशासन की पहल पर ढेकियाजुली नगर के शहीद मैदान में आज 76वां गणतंत्र दिवस समारोह आयोजित किया। इस गणतंत्र दिवस समारोह में ध्वजारोहण ढेकियाजुली उप जिले के आयुक्त दुत्रिभा बोहरा ने किया। ध्वजारोहण के बाद आयुक्त दुत्रिभा बोहरा ने जनता को संबोधित करते हुए गणतंत्र दिवस पर एक महत्वपूर्ण भाषण दिया। असम के सोनितपुर से प्रशांत वैश्य की रिपोर्ट। সমজিলা আয়ুক্ত হিচাপে আৰু ঢেকিয়াজুলিবাসীৰ বাবেও সমজিলা তেওঁলোকৰ কাৰণে মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ৰ পৰা তেওঁলোকৰ বাবে এইটো এটা উপহাৰ আৰু সেই উপহাৰৰ অংশীদাৰ হিচাপে আজি গণৰাজ্য দিৱসত নিজকে আৰু এজন ঢেকিয়াজুলিবাসী হিচাপে মই নিজকে গণ্য কৰিলোঁ আৰু অনুভৱো কৰিলোঁ। সেইটো মোৰ যথেষ্ট ভাল লাগিলে। আজি ৭৬তম গণতন্ত্ৰ দিৱসটি আমাৰ ঢেকিয়াজুলি সমজিলা আয়ুক্তৰ উদ্যোগত আয়োজিত হৈছিল। সুন্দৰভাৱে হৈ গৈছে। সুন্দৰ দৰ্শকৰ সঁহাৰি যথেষ্ট ভাল। বিদ্যালয়সমূহৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে সুন্দৰ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান পৰিৱেশন কৰিলে। আমি যথেষ্ট দৰ্শকসকল আমি সৰ্বসাধাৰণে যথেষ্ট উৎফুল্লিত হৈ উঠিছোঁ।